Yes, hello, good afternoon, ma'am. How are you? Yes, good afternoon, Ashutosh. I've been doing great, amazing. Thank you so much for asking. What about you? How are you doing? Yeah, I'm always fantastic. Thanks for Yeah. asking me too. So, how's your And day going? my day has been really amazing. It was exhausting because we've got some relatives home, but I managed to some extent. What about you? How's your day? Yeah, for me, I had a doctor's visit. Apart from this, it's a regular day, but it's scorching hot outside. So, apart Okay, from this, I'm enjoying my day, I would say. So, I today get we are here to talk about native talk classes. So, exactly. why have you decided to start native talk classes? Can you tell me something about it? Yeah, sure. So before we get started with those native talk classes, I'll just let them know something about myself. So I am Liza. I have been teaching English as a second language from the past 2 years, both in classroom settings and online. Currently, I'm working with Ingvarta. I have worked with High Local for about 2 years and Libra English Academy, which is one of the physical institutes in Srinagar, for about a year. So after having a long journey about student and after having a long research about them, we decided to start something that actually makes their learning attractive, very effective, and fun. And this is how we thought about Need to Talk classes. Oh, that's great to hear about talk classes. It's wonderful that you have a great experience, then you started your own classes. So it's an amazing thing, I Yes. would say. So, okay, the next question I would like to ask you that can you give me some details about native class top classes, that how they conduct classes, are they group classes or one-on-one? So what is Yes. that? Yes, exactly. So if we talk about native talk class, so native talk is exactly a classroom, right? Where Mhm. we group students as per their need and as per their level. For example, if you're at your beginning level, so we group you with four other students who are at the same level, right? So this Mhm. is how we add students in a group. Apart from that, if a student is not interested in group classes, he can go for one-on-one sessions, but we really suggest you join group classes because there are three advantages of joining group classes. Mhm. First one is learning becomes obviously very effective, isn't it? And second, you don't feel alone in the journey because when you look at the next person who faces the same problem you have been facing for so long, you start motivating yourself and you actually start learning. And third is you got to pay less for more time. So those are three advantages that I really suggest people join group classes over one-on-one sessions. So this is all about native classes. What do we do? एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन जितना मैंने अभी तक गेस किया है स्टूडेंट्स के साथ रहकर और उनकी प्रॉब्लम्स को देखकर आई थिंक दैट स्टूडेंट लिटरली लैक्स इन हिज स्ट्रेटजी उसको पता ही नहीं है जाना कहाँ पर है करना क्या है मतलब वो क्या करता है ना ग्रामर के पीछे भागना देन प्रोनाउंसिएशन के पीछे भागना और सबसे ज्यादा जो आजकल ट्रेंड है ना वो हम क्या करते हैं हम मतलब एज अ ट्यूटर मैं अपना स्लॉट खोलूंगी ठीक है मुझे स्टूडेंट्स बुक करेंगे एंड देन ही विल बुक मी फॉर मे बी फॉर अबाउट 15 मिनट्स और फॉर अबाउट 30 मिनट एंड डू यू लिटरली थिंक उन 30 और 15 मिनट्स में एक स्टूडेंट का कुछ हो सकता है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बगैर विल हैव नॉर्मल कन्वर्सेशन you'll ask me about my day, I'll ask you about your day, you'll ask me about my choices, this that done. And do you literally think that can help a student with his journey? That cannot, right? So it is possible Yeah, for you, exactly. वो नहीं करता है हेल्प तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लास ज्वाइन किया ठीक है आई हैव टू गिव यू 5 मिनट्स टू नो यू आई नीड टू नो योर वीक Mhm. पॉइंट आप नहीं बोलोगे बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्पीक ना यू विल नॉट बी Mhm. एबल टू एक्सप्लेन की प्रॉब्लम की भाई मेरे साथ एग्जैक्ट ये प्रॉब्लम है इफ यू न्यू द प्रॉब्लम यू वुड हैव सॉल्व दैट बट यू डिडंट नो इट राइट सो हमें क्या करना पड़ता है वी हैव अ सेशन विद स्टूडेंट उसको हम समझते हैं हम खुद ही फिर बोलते हैं कि इसकी ये प्रॉब्लम है देन वी ग्रुप द स्टूडेंट एंड देन वी प्लान फॉर द स्टूडेंट फॉर द नेक्स्ट मंथ हम उसको बोलते हैं कि इस पूरे मंथ आपको ये करना है एंड वी प्रोवाइड इट right, and only what you need to do is you need to be consistent with us and you obviously have to pay. This is something you have to do. मतलब आपको सिर्फ पे करना है आपको consistent रहना है उसके बाद आपका plan procedure everything we know that very well so you don't need to worry about that. तो इफ यू रियली थिंक कि आप क्या करेंगे आप सिर्फ रैंडम क्लास ज्वाइन करेंगे मे बी यू बुक अ सेशन या आप ग्रामेटिकल पोर्शन फॉलो करेंगे नो डाउट दैट मे हेल्प यू लेकिन एक लॉन्ग रन में वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा बिकॉज आई हैव बीन इनटू दिस लैंग्वेज फॉर अबाउट नाउ 12 years मैंने इसमें अपने 12 साल दिए हैं तो मुझे पता है कि स्टूडेंट कर क्या रहा है जो मेरे अपने Mhm. मेरे
है मेरे क्लास के, और जो मेरे साथ में जो मेरे क्लास के थे और जो आज मेरे साथ पढ़ा भी रहे हैं, दे स्टिल आर डूइंग द सेम वही चीजें, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिर प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिर वही चीज एक बुक सेशन करना, वहां पर स्टूडेंट्स के साथ रैंडम टॉक करना। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अ स्टूडेंट, दिस इज कंप्लीट अ मिथ। ये एक पूरा मिथ है कि आपको इफेक्ट होगा, and I don't think it will help you. That's why this was the purpose behind starting native talk classes, and this was the purpose of starting group classes. अब ये एक बड़ा ग्रुप नहीं होगा, it will not be a long group of 10 people or 20 people, not like that. It will be just a group of 4 people or even 5 people. तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको एक कंसिस्टेंसी जो वो होती है कि आगे वाला भी कर रहा है मैं भी करूँ ना, ही इज कंसिस्टेंट आई विल बी कंसिस्टेंट, ही इज डिसिप्लिन्ड आई विल बी डिसिप्लिन्ड. सो दिस इज हाउ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ कि ये भी कर रहा है मैं भी करूँ. एंड उससे क्या होता है ना, फिर आपका उसके साथ भी इंटरेक्शन बनता है, आपके फ्रेंड के साथ भी, द नेक्स्ट पर्सन विद यू, यू स्टार्ट नोइंग हिम मोर. तो इससे फिर एक वो फ्रेंडशिप में बनती है कि हाँ वो हम तो करते हैं, हम मजे करते हैं. सो दिस इज लर्निंग, ऐसे फन बनता है, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड those native talk classes. Yeah, Yes, exactly. I can't agree more with you because it is very important to make good bond with like your classmates or your friends because आप ट्रेनर के साथ बराबर कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते हो ना 2 साल 3 साल 4 साल राइट यू हैव टू टेक क्लासेस फॉर फ्यू मंथ्स देन यू हैव टू मेक फ्रेंड्स और यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस और आपको कोई 30 दिन में या 30 मिनट में कोई इंग्लिश सिखा नहीं देता दैट्स एब्सोल्युटली राइट और क्या होता है कि रैंडम आपने आज किसी अलग व्यक्ति के साथ बुक करा कल किसी अलग व्यक्ति के साथ बुक कर रहे हो तो ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स ये एक ऐसे तरीके से जैसे आपको कोई एक बीमारी है तो आप फिर ट्रीटमेंट जिस डॉक्टर से लेते हो उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए 2 महीना 3 महीने जब तक कि वो अपना कंप्लीट नहीं कर देता अब जैसे जबकि आपको ट्रस्ट नहीं है आज आप इसके पास जा रहे हो कल उसके पास जा रहे हो परसों उसके पास जा रहे हो तो आपकी बीमारी सही नहीं होगी द सेम अबाउट स्पोकन इंग्लिश तो आपको yes, पर्सनल ट्यूटरिंग हेल्प करती है जब कोई भी टीचर आपको लगातार ऑब्जर्व करेगा 30 दिन 40 दिन 2 महीने 3 महीने सो ही विल बी एबल टू नो अबाउट योर प्रॉब्लम्स आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो खुद ही जान लेगा एंड इट इज yes, वेरी इंपॉर्टेंट जब ग्रुप में होता है तो आपके अंदर वो क्लास वाली फीलिंग आती है कि नहीं नहीं वो उसने भी 15 दिन पहले स्टार्ट करा था आज तो वो अच्छा खासा बोल रहा है मैं क्यों नहीं बोल पा रहा तो फिर आप उसके क्लास के अलावा भी प्रैक्टिस करोगे तो क्लास ही अकेले आपको फ्लुएंट नहीं बना सकती है इट्स good. ओके क्लास किया आपने लेकिन उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करना होगा जैसे आप स्विमिंग करते हो आपको लगा कि ट्रेनर के सामने आपने स्विमिंग करना सीख लिया लेकिन जब आप Mm. अकेले तैरते हो ना तो फिर आपको डूबने का डर रहता है वही चीज इंग्लिश में है जब आप ट्रेनर से बोल रहे हो आपको लग रहा है अरे वाह मैं तो बोल लिया 30 मिनट 40 मिनट मैं तो बन गया इंग्लिश का बादशाह बट आप जब अकेले बोलने जाते हो फिर आप वही सफर करते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रैक्टिस आफ्टर क्लासेस एज वेल जब आप Yes, दोस्त बनाओगे अच्छा बॉन्डिंग बनाओगे उनसे कन्वर्ट्स करोगे then it is possible yeah yes, exactly. We need to know you personally because if we don't need you, we'll understand and we'll believe in you. For example, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम खुद पे बिलीव रखेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उस पर बिलीव रखकर आपको जानेंगे, या तो जो आप बोल रहे हो और आप वो खुद से नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग दैट फ्रॉम योर ओन, यू हैव लिसनड दैट, है ना, यू हैव लिसन टू समवन एल्स, वो बोल रहा है कि वो कैब्स में प्रॉब्लम है, जब मैं बात, यू वुड नॉट बिलीव, मतलब आज मुझे लगभग लगभग आई थिंक आई हैव बीन विद दो सेशंस फॉर अबाउट, लगभग मुझे आज 3 साल हो गए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ, दिस इज समथिंग डिफरेंट, बट के साथ मुझे 3 साल हुए हैं. कॉमन प्रॉब्लम, हर एक स्टूडेंट, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, कैन यू जस्ट टॉक समथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम, जैसे वर्ड्स नहीं आते हैं, वर्ड स्टक होता है, वर्ड्स नहीं आते हैं, वर्ड स्टक होता है, ये एक कॉमन आंसर बना है. इवन यू वुड नॉट बिलीव पीपल हैव लर्नड दिस आंसर एज वेल, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को रटा है. यू वुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को, अगर मैं उनको एक कॉमन क्वेश्चन करती हूँ ना, अलग अलग आंसर होने चाहिए, मतलब आपका हेडेक होगा उसको कुछ और होगा, सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं होगी, लेकिन मैंने जिससे भी सुना है ना, ग्रामर वोकैब वर्ड स्ट्रक, ग्रामर वोकैब वर्ड स्ट्रक, ग्रामर वोकैब वर्ड स्ट्रक, दिस इज समहाउ हम बिलीव खुद पर ही नहीं कर रहे हैं. दैट्स व्हाई यू नीड टू बिलीव योर ट्यूटर, यू नीड टू बिलीव योर पर्सनल कोच, है ना, जो आपको समझेगा, एंड देन ही स्टार्ट्स his journey with you for maybe for about 30 days 40 days, it depends on your course as well. That's why जो native talk classes है, हमें इसी बात पर focus करते हुए we decided to start those classes where we actually make a group, we train them, we actually personally train them. तो ये था इसके पीछे का motive. Yeah, I can understand. We need a lesson plan for that according to their own problems, whatever it is. तो यही होता है लोगों को ये क्वेश्चन सुन सुन के भी याद हो गए हैं and when you will tell them solutions about vocabulary also
then also next day they will ask the same question. Be patient, भैया time लगता है कोई भी चीज में. So Yes, that's how it is. I get also the same question many times, and I'll say to be patient enough to just yes, get the results. 2 दिन 4 दिन में आप 4,000 words नहीं सीख लोगे. That's not possible at all. But they don't right. want to work actually genuinely, but they want to become fluent in 15 days because they see such kind of advertisement कि 45 दिन में हम आपको बना देंगे अमेरिकन. So वो भी बनना चाहते हैं, but nobody tells them the truth. What is Yes, truth? That how long does it take to become fluent? So yeah, it's yes, very yes. important to have that personal interaction or tutoring with the trainers so they can guide you in a right manner. So then you can go forward with your journey. So if you people want to join Native Talk classes, so I will provide the details in description. So you can join from there and you can contact the trainers, and so you can start your classes to become fluent in future, because that is the best way to become fluent, I would say. So please check it out, the description below. There you will get details about Native Talk classes. So thank you so much. Many, many thanks to you for watching this video. Thank you so much, Ashutosh, for having your time. I really feel so good about the session. It was an amazing conversation, the way you spoke and everything. It made my day. Thank you so much for your day. Yeah, pleasure mine always. Thank you. And I would say in the last, don't forget to join Native Talk classes. Thank you. Bye. Bye. Bye.